10 questions a day doesn't impact your fun-filled life, but obviously it really impacts on your results. So here we are starting this session of chemistry paper solving of Cambridge level. And first we are doing May-June 2023 paper 1 variant 1. So here we have the first question. In a change of state, constant temperature and pressure, and the options are given. What will happen at constant temperature and pressure? Energy is released as strong forces of attraction form between the particles. जो forces of attraction है, they are developing. So that means energy is released. So that means कि आपका जो phase change है, that obviously happened from liquid towards solid or from gas to liquid. So that is the only change जिसमें energy release होगी, क्योंकि अगर आप reverse order में जाएं तो energy absorb होगी. The average distance between the particles changes very little. But जो average distance है, the particles के दरमियान जो average distance है, वो बहुत कम change हुआ है. That means कि वो gas तो नहीं थी, gas से conversion नहीं हुई. So the only option we have left here is liquid to solid. The C option is the correct one. X, Y, Z are the elements जिसमें X और Y same period में है. So अगर X और Y same period में है, that means they are same number of orbits. So in X and Y, first option we have only two shells. So A और B करेक्ट हो सकते हैं और C भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि C के अंदर तीन shells इन्वॉल्व हैं दोनों में. एंड C तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सो D ऑप्शन A, B और D अभी तक ठीक है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट है X एंड Z आर द सेम ग्रुप. अगर X और Z सेम ग्रुप में है तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होनी चाहिए Y और Z में. सो Y में 7 है एंड 4 है. एक में अगर देखें तो ये गलत है. B में देखें 7 एंड 7. यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट. और अगर आप डी को कंसिडर भी कर लें तो डी में आप देखें वाई के आउटर मोस्ट में 7 है और जी के आउटर मोस्ट में 4 है, विच इज नॉट पॉसिबल. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Remember, when we something some atoms are in the same period तो उनके number of shells same होंगे और वो जो same group से belong करते हैं उनके number of electrons in the outermost shell same होंगे. So these are the two basic principles जिस पर आप rely करेंगे. Number of electrons, protons और neutrons जो different particles में present हैं वो आपको show किए गए हैं. You have to figure out that what isotopes there we have. Atom contain equal number of electron and proton और neutrons number vary करता है. So here we are considering those. So here we have the first and four options. So 19 electron, 19 proton, and we have only the variation in neutron number, which is 20 and 22. So C option is the correct one. Second and third should not be considered because second is not an atom, it's an ion. Or जो अगर आप third consider करें, it's an atom, but it's not an isotope because it is proton number 20. Next one. Question number 4. Some statements are given to you about magnesium chloride, and we have to read that statement and then we find out which one is the correct. Each magnesium atom donate 2 electrons. Yes, they do. Each chlorine atom except one. Yes, they do. So option 1, the statement 1 is correct. Chlorine form an ion with a -2 charge. No, it is not possible. So second statement is not correct. Magnesium atoms and chlorine atoms share their electrons. No, they don't. They just, they show the give and take relationship. Number 4, magnesium forms an ion with +2 charge. Yes, it is true. So statement 1 and 4 is true. So the B option is the correct one. Question number 5. Ethane and ammonia, the covalent compounds, their dot and cross structures given to you, or हमने correct statement pick करनी है, which are given below. A molecule of ethane contains twice as many hydrogen atoms as a molecule of ammonia. Yes, they are. Ammonia contains 3 and ethane contains 6 hydrogens, so they are double. Unreacted nitrogen atom के outermost में 5 electron होंगे. Yes, they do. In a molecule of ethane, the bond between the carbon atom is formed by sharing 2 electrons, one from each carbon atom. Yes, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर they are forming bond. So all the three statements are correct. So option A is correct. Then the next question, when a strip of copper is placed in aqueous silver nitrate, a displacement reaction takes place. You have to pick the ionic equation. So first of all, आप option C तो बिल्कुल निकाल दें because it's not an ionic equation. So then we have D. D को हम बिल्कुल भी consider नहीं कर सकते because he said कि हमारे पास copper की strip है, so that is a neutral. So copper यहाँ पर तो +2 है, इसको भी निकाल दें. बच गई option A और B. A और B को without any other thing analyze करें कि इसमें से कौन सी balance equation है.
B is the balanced equation. Copper releasing two electrons which is accepted by two silver ions and they are neutralize themselves for copper का ion generate हो जाएगा. So B option is the correct one. Then coming towards the next, the compounds are listed. Calcium carbonate, potassium sulfate, zinc nitrate, and you have to calculate the greatest percentage of element which is present in that compound. It's a numerical and gonna solve it here. Calcium carbonate, you have to calculate the molecular mass. All of the masses are given to you. You have to calculate the molecular mass and then आप क्या करेंगे 40 divided by 100 and इसका molecular mass भी 100 है multiply by 100 and you calculate the percentage of each and every element of the compound and we can figure it out that calcium carbonate में ऑक्सीजन पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम और जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है and you the methodology is in front of you. Okay, so we have the correct option D. नेक्स्ट क्वेश्चन टू एक्वस सॉल्यूशंस आपको गिवन है Q एंड R, इनकी कंसंट्रेशन सेम है. सॉल्यूशन Q के अंदर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में. सो द बेस्ट वे इज कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें एंड आप मैच कर लें कि उसी अमाउंट ऑफ वाटर में वही नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन सेम है. सो हियर वी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स 4 ग्राम के जो आपने कैलकुलेट किए हैं mass divided by molar mass, you will get the 0.1 answer. Now 0.1 mole sodium hydroxide, that is written 1.1, that is just a mistake. 0.1 mole sodium hydroxide के 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. अब हम यहाँ पर देखते हैं और किसमें 0.1 है. यहाँ पर टू फर्स्ट में 0.2 है 250 सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी नहीं है. 0.2 mole again, that is incorrect option. Then we have 0.1 mole in D option, but that is in 1000 centimeter cube, so that is again the incorrect option. Consider the C option, 0.05 moles of sulfuric acid present in 250 centimeter cube. 250 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास तो वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. सो अगर हम वॉल्यूम डबल करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएंगे. सो 250 प्लस 250 500 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.05 प्लस 0.05 0.1 मोल. सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. देन हमें हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड सैंपल्स गिवन है, उनके मैसेज गिवन है एंड हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. मैसेज चूंकि गिवन है तो हम वाटर का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं just by subtraction of hydrated minus unhydrated. Here we have the methodology. weight of water calculate करें सबसे पहले, आप मैसेज को subtract करें, आपके पास आंसर आ जाएगा. then आप number of moles calculate करें अपने जो भी salt आपके पास given था और number of moles water के calculate करें. for example here we have iron sulfate 2.17 उसका weight है divided by 150 उसका molecular mass and you will get the number of moles. Again in the way we calculate 1.8 divided by 18 for water और जो आपका least number है उसे आप divide करेंगे and you will get the number of moles. We will do it same for calcium sulfate and iron sulfate. You will get the result and the correct option is D. Now the last question. Question number 10. What has a mass equal to the mass of 1 mole of water? 1 mole of water we have here. So we just consider any other 2 moles of hydrogen molecule doesn't match here. One molecule in mole is a different term, so we doesn't match here. 24 decimeter cube water we are not converting into a volume parameter because we already have one option in which 1 mole of steam is mentioned. Steam is again water in gaseous form, so the B option is the correct one. So just the 10 questions and you can keep your chemistry up.